Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Azam Mukhtar from MK Preparation, and today we are going to discuss the Federal Public Service Commission paper Secondary School Teacher BS 17, which was held on 26 December 2024. It is evening paper. So let's start. MCQs number 1, Learning by Doing Method by John Dewey. ये जॉन डुई ने जो है वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो है वो जिसको एक्टिविटी मेथड भी हम कहते हैं इस पे काम किया था और ये प्रैग्मेटिज्म के बारे में है। लर्निंग बाय डूइंग खुद से काम करना। द वर्ड करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, तो ये लैटिन जो है वो लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है करिकुलम, विच मीन्स पाथ और रनवे। The third MCQ, the curriculum in which there is nothing to learn from the teacher is, the correct answer was null curriculum. MCQs number 4, the least acceptable value of discrimination index for average student. The correct answer was 0.36. डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में आपको ये बता दें कि 0.3 to 1 ये एक वैल्यू होती है जिसके दरमियान जो है वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है डी की डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की। MCQ number 5, the best value of discrimination index for question of grade 9 English is 0.94. The correct answer. MCQ number 6, dash is a strategy of changing old information based on new information, जिसमें जो है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है, स्ट्रेटजी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। MCQs number 7, which domain assesses students' behavior and attitude? 3 लर्निंग डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इसमें अफेक्टिव डोमेन के बारे में आपको बताया गया है जिसको डेविड क्रैथहॉल ने पेश किया था 1964 में। इसका करेक्ट आंसर है अफेक्टिव डोमेन। MCQs नंबर 8, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? गिवन ऑप्शन में नन ऑफ दीज वाज द करेक्ट आंसर। MCQs number 9, which one is not law of learning? Law of environment was not among law of learning. थॉर्नडाइक ने इसको पेश किया था। द पायनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज रॉल्फ टेलर इज द राइट आंसर। इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट पे काम किया है। MCQs number 11, how many years of education do a student typically complete before entering यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी 12 years एजुकेशन होनी चाहिए। MCQs number 12, which one has narrow in scope? The correct answer was teaching management. MCQs number 13, socio-analysis theory 8 stages developed by 8 stages को जो है एरिक्सन ने पेश किया था। First duty of teacher is to teach. The correct answer was teach prescribed curriculum. MCQs number 15, repetition of concept of same level into consecutive classes lacks the quality of. The correct answer was vertical organization. MCQs number 16, who conducts the intermediate exams in Islamabad? Option में था फेडरल बोर्ड, प्रोविंशियल बोर्ड। द करेक्ट आंसर वाज फेडरल बोर्ड। MCQs number 17, हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें जो है वो 5 स्टेजेस हैं, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। द करेक्ट आंसर वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। MCQs number 18, which research is qualitative? Case study is a qualitative research. MCQs number 19, which theory states that individual has inherent ability to grow and develop? The correct answer was humanistic counseling. MCQs number 20, good MCQs have. The correct answer was clear stem and plausible option. MCQs number 21, which term refers to a characteristic that can vary among subjects? The correct answer was variable.
Which is a qualitative research technique? Given option survey, hypothesis, experiment, and none of these. The correct option was none of these. इनमें कोई भी जो है क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक नहीं है, ये सभी क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक हैं. सर्वे, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट. MCQs number 23. What is the primary focus of descriptive research? The correct option was explanation. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो प्राइमरी फोकस होता है वो एक्सप्लेन करना होता है. 24 MCQs. Which test commonly used in educational counseling to assess student strength? The correct answer was achievement test. अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को असेस करते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग में. विच रिसर्च यूजेस क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर को सर्वे जो है वो रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है. MCQs number 26. Emotions are transitory. The correct option. MCQs number 27. Fourth stage in Piaget theory. The correct option was formal operational stage. Piaget की जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस हैं. सेंसरी मोटर स्टेज है और इसके बाद जो है जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है. 28 MCQs. The horseshoe arrangement is, the correct option was semicircle. MCQs number 29. If a teacher tells her own experience for the sake of developing understanding of student in class, which type of curriculum is? The correct option was experienced. MCQs number 30. Which one is avoided by the teacher in counseling? The correct answer was क्विक एडवाइस. क्विक एडवाइस से जो है वो टीचर को अवॉइड करना चाहिए काउंसलिंग. MCQs number 31. Which of the following best describes the difference between guidance and counseling? The correct option was guidance is broader and counseling is specific. MCQs number 32. Status of single national curriculum currently partially implement. इसको मुकम्मल तौर पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. इसको इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान ने पेश किया था 2021 में, सिंगल नेशनल करिकुलम. MCQs number 33. What is the main goal of education policy? The main goal of education policy is improve quality education. क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना. MCQs number 34. What is the goal of education policy of Pakistan in recent year? The main goal of educational policy in Pakistan is teacher training and professional development. टीचर को ट्रेन किया जाए और प्रोफेशनली डेवलप किया जाए. MCQs number 35. What is the key role of teacher in public secondary school? The correct option was teaching, leading and management. MCQs number 36. Classroom management is the responsibility in secondary school. The correct option was टीचर. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्कूल में क्लासरूम को मैनेज करे. MCQs number 37. The strategies to address disruptive behavior promptly is called classroom management. MCQs number 38. In technique of classroom management, the teacher ignore misbehavior. The correct option was direct student negative behavior. MCQs number 39. The basic purpose of classroom management is to improve student learning. MCQs number 40. Effective classroom management involve clear communication, conducive learning environment. The correct option was all of these. MCQs number 41. Portfolio assessment is both summative and formative. The correct option was C, both summative and formative. MCQs number 42. Highest literacy rate in provinces. तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो पंजाब का है इन कंपैरिजन टू सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान. MCQs number 43. Secondary teacher job is. The correct option was instructional supervision and teaching. MCQs number 44. Planning of primary school can be called. The correct option was imperative planning.
MCQ number 45, which is broader, the correct option among guidance. गाइडेंस काउंसलिंग में जो ब्रॉडर है वो गाइडेंस है. MCQs number 46, what should be done at the end of the class? Teacher should provide homework to the students. The correct option was provide homework. MCQs number 47, theory is made in which type of research? The correct option was none of these. थ्योरी जिसमें जो थ्योरी के बारे में पेश किया जाता है, टाइप ऑफ रिसर्च वो फंडामेंटल होती है. फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी को बनाया जाता है. MCQ number 48, challenges faced by Pakistan in gender equality. The correct option was cultural norms discourage females. MCQs number 49, top-down approach is related to which theory? The correct option was autocratic acts. MCQs number 50, evaluation at the end of. जो evaluation आखिर में हो उसको summative कहते हैं और जो during उसको हम formative कहते हैं. Synonyms कुछ दिए गए थे: ungainly, tramp, throttle, thrifty, spare. Antonyms: daunting, dawdle, strength, flimsy, forbidding. Thank you so much for watching this video, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel.